If I can get a thumbs up. And also the second thing which I will request, if people, thank you Saujanya for that thumbs up. So if you want to get the best experience, I would request you to be on your top right hand side corner. Try to get in, let me do a stop share. Try to get in the mode speaker view mein aaiye aap. If you are in the speaker view, then you will hear me the best. So I will request you to put yourself in the speaker view. And now I'm all ready. So let me start with sharing the screen. And this is the way you will see you will see me listening and you will see the PPT. So we welcome you on this Sunday morning to UT Talks presentation by UT Career Research Cell. Now, this is what we do every Sunday, myself and my team. We are doing it on Sunday where we take certain careers and discuss about certain careers with the students. So let's get started. Today, what we are doing is these are value-added lecture workshops for students. This is primarily to promote awareness, which helps to take informed decisions. Today, we are doing 11th in the series this year. And today we are going to talk about two careers. We are going to talk about management and commerce. In दो careers के बारे में हम बात करने वाले हैं. Management and commerce. Coming up next Sunday is in the next month, masters from USA, Canada, and IIT JEE NEET after standard 10. These are the two seminars which are coming up in the next month. Please follow us at universaltutorials.in. There you will come to know all the details. So if you have those wish to attend those seminars, it's coming up next couple of Sundays, same time 11:30. So with this, let's get started with today's agenda. What am I going to talk about in today? Today we are going to talk about universal tutorials. Very quickly, I'll tell you about universal tutorials. People who are not familiar with universal tutorials, I'll tell them about universal tutorials. Then I will talk about the career scenario in India. How does the career scenario in India work like? Management focus is the one part I will talk about. Management focus is if you want to pick up a career in management, then how you can go about it after standard 12. And then the second is commerce focus. So these are the two careers which I'm going to talk about. And then finally, we'll be open for question answers, open house. It should take me approximately around 45-50 minutes to cover both of these sections, management and commerce. These are two popular options which I'm going to talk about. So, it will be a good idea if you could, write down your questions which you get. I had initially made it an open house, but I think I did not get a lot of response. So I would like it this way that let me do the presentation in the first part. And if you have questions, please write it down. And towards the end of the presentation, I would then discuss question answers. Chaliye, with that done, let's get started. So before we begin, a good idea to make your notes. Question and answer will be at the end. As I announced, question and answers will be at the end. So it will be a good idea to, there will be a feedback form which you will get. हम लोग इसमें बहुत मेहनत करते हैं PPT बनाने में और ये सब करने में. अगर आप हम उस feedback form में हमको लिख के देते हैं, how are you liking it? It helps us to inform. Please do that. And also, if it's a good idea कि आप कोई paper pencil अपने पास रखें, lot of information is coming your way. It will be good idea कि आप अपने notes बना लें उस पे. So please make sure grab a paper pencil so that you can make appropriate notes. Also, I will be giving you an option of receiving this entire PPT in PDF format at the end of the presentation. Look out for that also. Chaliye, let's get started. So, सबसे पहले, let me understand my target audience. जो आप सब लोग हैं, उसमें से Nilesh, are we able to conduct the poll? Have you prepared the poll? No, sir. No. अच्छा, तो we will take, I think अपन एक hand call ले लेंगे. There is not much of an audience. So let me understand it and please give me. अच्छा, एक मैं request करूँगा कि आपके जो नाम हैं, जो आपने screen पे नाम कर रखे हैं, make sure these are student names who are attending, so that we can correlate it properly. So let me understand who's my audience today. So pick any one of the following. If you are in standard 9, 10th,
if you are in standard 11th, if you are in standard 12th, and if you are beyond 12th. So if I may ask Sharad, can you make a note of them as I ask from each one of them? Sharad, yes, are sir. you there? Yes, sir. Chaliye. So let's start. My first person on my screen is Raghav. Raghav, can you tell me where do you belong? A, B, C, D. Where do you belong? Sir, A. A. Sharad, please write Raghav ka A. Yes, sir. Saujanya, where do you belong? Sir, B. Okay, Saujanya is belonging to B. Isaki Natarajan, where do you belong? Okay, we lost Isaki. Ayush Hingar, where do you belong? Ayush Hingar. C. C as a Calcutta. 11th. So B as a Bombay. Okay. Then I have Vineet Rakesh Sharma. You are 11th. Is that right? Vineet, are you 11th standard? Hello, sir. Yeah, are you 11th standard? Yes, sir. Okay. Chirag. 12th. Chirag 12. So I think I have the right audience with me, where people are either in A, B, or in fact A and B only. There's nobody from the C and D category. So this is where is my entire presentation. I would tailor make it accordingly and I'll present it accordingly. Chaliye, let's get started. Continue with the presentation. Very quickly telling you about universal tutorials. Well, students, about Universal Tutorials is an organization which was started by me around 23 years back. Till now, we have servicing about more than 35,000 students, 35,000 plus students we have serviced. And we cater in three broad areas. What are the three broad areas we cater to? We cater to board exams, CBSE and ICSE in standard 9th, 10th, in 11th and 12th. We cater to board exams, CBSE and ICSE. We cater to Indian exams. Indian exams are IIT, NEET, then we do IPM, CA Foundation, and all these exams, CMA Foundation, all of these exams we do in the Indian exams. And we also have a study abroad division, GRE, IELTS, TOEFL, SAT. So these are all the three areas which we cater to. Today, I am here primarily from the Indian exam section, where I'm talking about two big exams, IPM and Commerce, CA Foundation and CMA Foundation. In section के through, मैं आज आपके पास आया. So now jumping into the heart of the presentation. So what are the career options? So after standard 10th or 11th, जैसे जो बच्चे हैं मेरे पास जो audience है आज का, they are students who are presently in 10th or in 11th. So आपके पास क्या career options हैं? So as आपका एक चौराया है जहां पे आप जो चाहो वो कर सकते हो, तो उसमें से today before we jump in and understand कि क्या career options हैं, let's understand the career scenario in India. How does the career scenario in India look like? Career scenario in India looks like कि depending upon आप क्या decide करते हो. जैसे किसी एक बच्चे ने decide करा 10th के बाद कि उसको engineering करनी है, तो उसको IIT JEE का entrance exam लिखना है, and then he can get into a dream college like IIT Bombay. But suppose he decides कि मेरे को medical करना है, तो उसको एक NEET का entrance exam लिखना है, और फिर he can get into his dream college AIMS. ऐसे ही somebody decides कि उसको management करना है, then उसको IPM या SAT का entrance exam लिखना है, and then he can get into IIM Indore. तो मेरा बोलने का क्या मतलब है? If you all will understand, India में how the career scenario works is कि you need to decide after standard 10th what area you want to take your career in. And then उसका एक एग्जाम लिखना है, और ये एग्जाम कब लिखना है? स्टैंडर्ड 12th के बाद एक एग्जाम लिखना है, एंड देन यू विल बी अलाउड टू एंटर अ कॉलेज. तो ये सब मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं primarily it is important that after standard 10th you start and decide कि आपको किस दिशा में अपना करियर बनाना है. आप जितना इसको डिले करेंगे, आपके उस एग्जाम की तैयारी उतनी लेट हो जाएगी. So as part of that, today we are focusing on two careers, and हम आपको उन दो करियर के बारे में बताएंगे. So what is the way to decide कि कौन सा करियर करना है? कि you listen to so many talks, you understand कि या ये is this my cup of tea, क्या ये मेरे को अच्छा लग रहा है, and then take a decision. So
अगर 10th के बाद देखेंगे तो 4 ब्रॉड करियर ऑप्शंस हैं. व्हाट आर दीज? You can get into science, you can get into commerce, you can get into arts and humanities, or you can get into general stream independent careers. आज today, as part of the talk today, I'm not talking about science, I'm not talking about humanities. I will be talking about science next month, in the next month Sundays, next to next Sunday seminar. Arts and humanities on another day, but today I am talking about commerce and I am talking about a general career management. इन दो के बारे में मैं आज बात कर रहा हूं. So I will be talking about these careers today. So what are these careers? So सबसे पहले let's talk about, so today I am talking about management and commerce. These are my topics for today. Now let's very quickly understand. So first I will talk about management. और इसका रास्ता किधर है? इसका एग्जाम कौन सा है? इसका एग्जाम है IPM. IIM stands for Indian Institute of Management. IPM is Integrated Program in Management, and I call it as less explored but very very high potential. ये ग्राफिक जो हमने बनाया है, it is a less explored but very high potential. You can really rise up in this career very fine. So ये मैनेजमेंट का क्या है? So let's try to understand what is management. एक किसी कंपनी में, कोई सी भी कंपनी हो, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटास, बिरलास, ये कोई सी भी ऐसी कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है, उनको गोल अचीव करने के लिए कौन मदद करता है? They need efforts from marketing, they need efforts from human resources. आदमियों के बिना कंपनी नहीं चलती है. They need finance. They need people who understand finance. They obviously need people who understand operations, and they would need people who understand IT and systems. So इन सब को मैनेज करने वाले जो लोग होते हैं, all of these area is nothing but that comes under management. So ये मैनेजमेंट आप कर रहे हो तो इस कंपनी के ये अलग अलग पहलू को आप हैंडल कर रहे हो, and you could specialize in one of them or you could be general in all of them. This is largely management. कि एक कंपनी को मार्केटिंग की भी जरूरत होती है, HR की भी होती है, फिनेंस की भी जरूरत होती है, ऑपरेशंस की भी जरूरत होती है, IT सिस्टम्स की भी जरूरत होती है, और ये जो मैनेजमेंट पढ़े हुए वाले बच्चे होते हैं, ये कंपनी को इन सब चीजों में बहुत हेल्प करते हैं. So companies value people who are with management degree and give them very good opportunities. चलिए, having said this, आगे बढ़ते हैं. So अब कौन सी फेमस पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई करी and have risen up very nicely in there? Now these people will inspire you कि आप इनके जैसा बनना चाहते हैं. So as young kids you want to decide कि क्या मैं क्या करूं मेरी जिंदगी में. तो one of the ways to do is start looking up at these individuals. So people, can you tell me who is this individual? Somebody could unmute himself or herself. Obviously, Sundar Pichai. So he is also a management graduate. He did his management from Stanford, and today he is he is the CEO of Google. Can somebody tell me who's this lady? कौन बता सकता है ये लेडी कौन है? Somebody unmute and say. Nahi, Indra Nooyi. She is or was the CEO of PepsiCo company, and she had done her management from Yale. So these are people who have done management courses and have run or headed main companies. Who's this fellow? बहुत ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते हैं. चलो कोई अनम्यूट करके बोलेगा इसके बारे में. अरे it's a small group. अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ पार्टिसिपेटिव करेंगे तो ये बोलने में मजा आएगा, नहीं तो मैं एक वन वे डायरेक्शनल टॉक करूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा. मैं तो एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ पीपल कैन टर्न ऑन देयर वीडियोस ऑन तो बोलने में थोड़ा मजा आता है, नहीं तो ऐसा लगता है आई एम टॉकिंग टू वॉल्स. अभी मैं सिर्फ गुरुमुख सर को देख रहा हूँ, उनके रिएक्शन देख रहा हूँ, और आप सब लोगों के तो सिर्फ ब्लैक टाइल्स देख रहा हूँ. तो रिक्वेस्ट हो गई, जब प्री कोविड में हम ये सब वेबिनार करते थे ना, आमने सामने करते थे, तो उसका मजा अलग था, लेकिन इसका मजा अलग है. अपने घर बैठे आप ये सब चीजें सुन सकते हैं. वेल चलिए, सो दिस इज आनंद महिंद्रा, द ओनर ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा. दे आर अ कॉन्ग्लोमरेट, बहुत सारी चीजों में है. सो ही इज एन MBA फ्रॉम हार्वर्ड. देन चलो ये बताएगा कौन है ये?
चलो ये तो आपकी जनरेशन का है. He is a very famous fellow. चलो I will not take names then. ये तो आप बताओ बच्चों, बच्चों को मालूम होगा दिस जेंटलमैन, इन्होंने बहुत हलचल मचाई थी. चलो लेट मी डू अ रोल कॉल. आई हैव आयुष हिंगर विथ मी. आयुष बताओ ये कौन है और इन्होंने क्या हलचल कर रखी है? नहीं, आई लेट मी स्किप दिस. बोलिए आयुष, बोल रहे थे आप? Sir, no idea about that. नो आइडिया अबाउट दैट. अरे यार, चलो somebody else would volunteer. Somebody else would volunteer. चलो let's keep that as a suspense. आप मालूम करिए who's this next personality. Jeff Bezos. Yes, तो ये तो पर्सनालिटी, बहुत फेमस पर्सनालिटी. आई कीप दैट एज अ सस्पेंस. आई गिव यू, ये इन्होंने एक बहुत बड़ी फूड कंपनी लॉन्च करी थी इंडिया में. चलिए, सो ये सबके साथ कॉमन क्या है? ये सबके साथ कॉमन ये है कि दे आर ऑल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स और इन्होंने अपनी मैनेजमेंट स्किल से चीजों को, मैं थोड़ी सी देर बाद इनका नाम आपसे वापस पूछूंगा, तो ये सब ने प्राइमरीली मैनेजमेंट करी. नाउ मैनेजमेंट, अब जो मैं सेक्शन बात करने वाला हूं वो मैं सेक्शन बात करने वाला हूं कि आपको अगर मैनेजमेंट पोस्ट 12th करना है तो आप वो सेक्शन कैसे कर सकते हो. पोस्ट 12th, हाउ कैन यू डू मैनेजमेंट आफ्टर स्टैंडर्ड 12th. आफ्टर स्टैंडर्ड 12th मैनेजमेंट का कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है? मैनेजमेंट का कोर्स स्ट्रक्चर इज आफ्टर स्टैंडर्ड 10th you can choose any one of the fields. You can either go in science or you can go in commerce or you can go in humanities. ऐसा नहीं है मैनेजमेंट करना है तो साइंस नहीं कर सकते. साइंस करा तो भी आप मैनेजमेंट कर सकते हो आफ्टर स्टैंडर्ड 12th. कॉमर्स तो आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. रिमेंबर मेरी पहली स्लाइड, एक्सट्रीम इंडिपेंडेंट. नेक्स्ट, तो फिर आपको 12th के बाद क्या करना है? 12th के बाद आपको ये 3 ईयर का बीबीए, बीएमएस, बीबीएम ऐसा डिग्री कोर्स लेना. यू हैव टू एनरोल इन अ 3 ईयर कोर्स. अच्छा, इनके ये नाम अलग अलग है. जैसे कृष्ण भगवान के नाम 108 नाम है ना, अलग अलग नाम है. वैसे बीबीए, बीएमएस, बीबीएम, इनमें कोई फर्क नहीं है. ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूट अलग अलग तरीके से नाम बोलता है, बट दे आर सिमिलर कोर्सेज. तो आपको इन किसी कोर्स में एडमिशन लेना. And then you can, after that BBA degree, you can get into something called as post graduation, MBA या PGDM. PGDM, IIMs offer PGDM, अलग दूसरे इंस्टीट्यूट्स ऑफर MBA. ये मास्टर लेवल कोर्स है. तो ऐसे करके आपको ये आप टोटल आप 5 साल की पढ़ाई करो. और एक और ऑप्शन है जो मैंने येलो में दिया है. After standard 12th, you can directly get into an institute and do a 5-year course. आप MBA direct, BBA plus MBA एक साथ integrated कर सकते हो after writing an exam called as IPM. And आप 5 साल के लिए direct ये काम कर सकते हो. तो ये भी आप कर सकते हो. तो this is a typical management structure. चलिए, तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? जैसे मैंने बोला, इंटीग्रेटेड ऑप्शन है. You can directly get into a BBA plus MBA program 5 years. Which is through IPM exam, which happens after standard 12th. या फिर you can get into bachelor's, BBA, BMS, BBM program and do 3 years and then take an MBA entrance after 3 years like CAT and then get into an MBA program. तो आपके पास दो अप्रोच है. One is integrated approach और a bachelor's. Integrated में you write the exam called as IPM and bachelor's में you would write एक BA, BMS का एक management CET का एग्जाम होता है, वो लिखेंगे and then you will get into these courses. And once you get into these courses, 3 साल बाद वापस एक एग्जाम लिखेंगे called as CAT. अब आपके कुछ questions होंगे तो hold on to your questions, write down on a piece of paper, ask us towards the end of the seminar. चलिए, what are the top institutes? कौन से top institutes हैं for doing management in our country? For doing management in our country, I'm starting with the 5th, Symbiosis Pune and Nirma Ahmedabad. These are by the general ratings जो हमने इतने सालों में देखी हैं, we are giving you this. Then comes Department of Management Studies, Christ University, Bangalore. Bangalore बोलते थे पहले, इसको अब आजकल बेंगलुरु बोलते हैं. So this is again rated very good university. Then comes NMIS, which is based out of Bombay, Narsi Monji जिसको बोलते हैं. That's rank number 3.
Then Shahid Sukhdev College of Business Studies, Delhi. This is there. And first is IIM Indore. This is after standard 12th की बात कर रहा हूं मैं, after standard 12th की बात कर रहा हूं. I'm not talking about graduation level पे. I am talking about after standard 12. तो ये 5 बड़े institutes हैं जो we think are the best rated colleges जिनमें आप bachelor's BMS या integrated program कर सकते हो. चलिए, again questions हो तो लिखते जाइए and then ask me at the end of the presentation. चलिए, IIMs are dream institutions. जो सबसे पहला था IIM Indore. These are the dream institutions to get into. Indian Institute of Management are the top institutes of management education. There are 20 IIMs in the India. Mostly they only offer postgraduate courses. They do not offer after 12th. But there are 5 IIMs which have started offering after standard 12. Which are these 5 IIMs? ये सब मैं अभी बताऊंगा आपको. 5-year courses which are called as IPM, Integrated Program in Management. You get an MBA after 5 years. आप डायरेक्टली 12th के बाद जुड़ते हो तो आपको 3 साल के बाद वापस कैट का एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है. So ये कौन से 5 IIMs हैं? ये 5 IIMs. IIM Indore, IIM Rohtak, IIM Ranchi, IIM Jammu and IIM Bodh. इनमें एक एग्जाम होता है which is called as an IPM AT exam और इस एग्जाम के तहत आपको डायरेक्ट 5 साल की एंट्रेंस मिलती है. तो IIMs offering IPM and their exam, ये ऐसे सारे exams. Again, hold on to your questions. आप questions लिखें and then you can ask me these questions at the end of the presentation. चलिए आगे बढ़ते हैं. Registration for all these exams starts January, February में चालू होते हैं और एग्जाम कब होती है? मई, जून में एग्जाम होती है. आफ्टर स्टैंडर्ड 12th, मतलब जब आप 12th में होते हो. So 12th के January, February. If suppose let's take a student who's presently in 11th. I had one student who was in 11th. I think his name was क्या नाम है उस बच्चे का? यहाँ पे था वो उस बच्चे का नाम विनित राकेश शर्मा. He was presently in 11th. तो आप 11th का एग्जाम अभी अगर 11th में हो तो आप 11th का एग्जाम मार्च 23 में दोगे. 12th का एग्जाम मार्च 24 में दोगे. तो अगर मैं इसके अंदर समझाऊं तो जनवरी फरवरी 2024 में आपका रजिस्ट्रेशन विनित चालू होगा और एग्जाम होगा आपका मई जून 2024 में ये IPM का एग्जाम. आई होप दैट्स अंडरस्टूड विनित. चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. थैंक यू. चलिए, अच्छा लगा कि कोई एक्नॉलेज कर रहा है. चलिए, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दिस एग्जाम? सिलेक्शन प्रोसेस इज टू फुलफिल एलिजिबिलिटी यू हैव टू राइट एन एंट्रेंस एग्जाम. एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपको एक रिटर्न टेस्ट लिखना है और एक इंटरव्यू करना है. ये 2 चीजें हैं और फिर फाइनली यू गेट एन एडमिशन ऑफर. So you have to take an entrance exam और उसके बाद एक इंटरव्यू है और एक टेस्ट. Component weightage, past academics, आपके past academics standard 10th के marks 10 to 20% होते हैं. Aptitude test 60 to 70% and that interview and personal interview and group discussion makes it 20 to 30%. ये ऐसे इसका weightage होता है for you to get an entry into IIM for the integrated program and management. Again, इससे related questions हैं तो please ask me at the end of the presentation. Each IIM would follow their own individual track for selection. IIM Ranchi would accept SAT score. ये लोग IPM के साथ-साथ SAT score पे भी admission देते. So this is one of the things which you need to remember. चलिए, अब ये institutes IIM Indore. Path to IIMs is through IPM AT. अब IPM AT क्या चीज है? You need minimum 60% in standard 10th and maximum 20 years of age as on July 31 of examination. You could be from any stream. You could be from science, commerce or arts. आप किसी में से भी आ सकते हो and you can do IPM. चलो, let's understand this exam. IPM AT के एग्जाम के बारे में पढ़ते हैं. IPM AT एग्जाम कितने बच्चे लिखते हैं? इसमें करीब 25,000 बच्चे लिखते हैं for 550 plus seats. 25,000 students appear for it. Mode is online, computer based score होता है. Out of 400 होता है and there is negative marking. So if you do it correct, you get +4. If you do it wrong, you get -4. Duration is 120 minutes. 2 घंटे का टेस्ट होता है.
100 से 120 क्वेश्चंस आते हैं. All of them are not necessarily MCQs. There is a combination of MCQ plus subject. Tentative schedule, as I have already said, it happens in every year in the month of May. So आप 12th का एग्जाम मार्च में लिखते हो, उसके बाद आप ये एग्जाम लिखते हो. सेकेंड वीक ऑफ मे में ये एग्जाम. सिलेबस क्या है? सिलेबस इज क्वांटिटेटिव मैथ्स टिल स्टैंडर्ड 10th and very little high maths. Calculus वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए. They need general ability maths, ratio, proportion, percentage, वो सब चीजें चाहिए क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स में. वर्बल इज इंग्लिश एंड रीजनिंग. मतलब क्या आपको पैराग्राफ, इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़ना आता है? कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट डज दैट पैराग्राफ मीन? कैन यू अंडरस्टैंड द आर्गुमेंट्स and can you read it and reproduce it? So those kind of skills is what is required. Quantitative and verbal skills are required. I'm going slow. I'm giving you time. अगर आपको इनकी फोटोग्राफ्स लेनी है, आप इनकी फोटोग्राफ्स सेव कर करके अपने कंप्यूटर पे रख सकते हो, या आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो. चलिए आगे बढ़ते हैं. What is the course fees of this? Course fees or course क्या है? Course, they will teach you mathematics, they'll teach you statistics, they'll teach you economics, psychology, sociology, economics and humanities. ये सब पढ़ाएंगे आपको. The fees is roughly 4 to 6 lakh rupees per year for 3 years. तो आपका करीब 12 से 18 लाख रुपए 3 साल का खर्चा आएगा. That is for 3 years. और जो 2 साल का MBA कोर्स होता है, उसमें you would get merged with the main MBA course. जो बाकी बच्चे कैट लिख के आते हैं, आप उन्हीं के साथ बैठोगे. And then the fees is 8 to 10 lakh rupees per year for 2 years. So this is how the fees is. 12 लाख रुपए पहले 3 साल के और करीब 16 लाख रुपए नेक्स्ट 2 साल के. So that makes it 12 plus 16, about 28 lakh rupees for 5 years. This is the course fee structure. This is done by IIM इंदौर से होता है ये कोर्स, और वो दूसरी 5 IIMs मैंने बोली. So this is the rough fee structure to give you an idea. This information is important for parents so that they know this is how it is. Entrance मैंने already अब अगर IIM एक एंट्रेंस होता है, क्या दूसरे एंट्रेंस हैं दूसरे कॉलेजेस के लिए? Yes. What are those entrance exams? एक है JAT. This is done by Shahid Sukhdev College of Business Studies at Delhi. It is in second week of June. Then NPAT Narsi Munji करता है एक एग्जाम. Narsi Munji, all Narsi Munji campuses के लिए in second week of May. Then Symbiosis करता है SET, Symbiosis University Pune, that is in first week of May. और एक CUET का जो अभी recently launch हुआ है, this is for Central Universities and Christ University Bangalore, April and month of May. So ऐसे ये exams हैं. अब ये exams, IPM is the mother of all these exams. अगर आपने IPM की तैयारी करी तो इन सारे एग्जाम्स की तैयारी होगी. And you can sit for these exams and can shoot for these universities. So IPM takes you to the IIMs, JAT takes you to Shahid Sukhdev Business College, NPAT takes you to Narsi Monji, SET takes you to Symbiosis, and CUT takes you to Christ University. So ऐसे वाले exams और हैं. Are they very similar to IPM? Yes, they are very similar. So आपको इनके लिए अलग-अलग तैयारी नहीं करनी है, एक तैयारी करनी है उनसे ये सारे एग्जाम्स. And you can shoot for all these colleges, and if you can get a dream admission IIM, that's great. नहीं तो इन सब colleges में भी similar programs available हैं. At UT हम कैसे पढ़ाते हैं? हम आपको 1 साल का variant देते हैं. For students who are presently in standard 11th or 12th, you can join us. We have every Saturday Sunday class happening twice a week, 2 hours per day. हमारी एक क्लास हो रही है, तो आप उसमें हमको ज्वाइन कर सकते हैं. एंट्री अप टू अगस्त 2022 अभी तक हमने चालू करे हुए 1 महीना हो गया है. एंड देन वी विल बी डूइंग अ मेकअप क्लासेस. So it is 2 hours. One Saturday we teach you English, was I think mathematics, and Sunday we teach you English. Like this 2 hours ऐसे करके this would be a 30-week program, about 5.5 months का program होगा हमारा, जिसमें हम आपको basic एक 1 year का IPM की तैयारी करवा देंगे. And then you'll be ready for appearing for the IPM exam in the month of May. And then we will also do a crash course. We also do a crash course. This generally happens after the 12th board exams. This is a more intense course, 6 days a week, 4 hours per day. For students who are presently in 12th, you can join this crash course after standard 12. और जो 1 year course join करते हैं, उसमें crash course is automatically available free of cost. So you get 1 year में initial preparation plus crash
as part of the program. Crash may you will get only crash. So like this, programs are available at universal tutorials. UT and IPM 80 for fees, you need to call us and contact us separately. Both variants can be taken up by students of any stream, science, commerce, or arts. कोई भी ये चीज पढ़ सकता है. And programs are currently available in blended learning mode through online and classroom. So some students are coming on Zoom and some students are coming physically. Physically, students are these classes being delivered at Kharghar, UT Kharghar. So that's, and if you're not at UT Kharghar, then you can join online the same class, physical class you can join online. So like this, we are giving. Can also combine with आप कोई JEE या SAT programs कर रहे हैं, उनके साथ भी इसको combine कर सकते हैं. And you can do SAT plus this. So like this, you can do all of this. I think I'm done with the management. Again, I take a small pause here. If anybody has any questions, I would request you to please note it down in your books, or else I can, would you like have something? Would I like to take a 1 minute question answer? कुछ 2 minutes के कुछ लें बीच में, or you are good and we'll continue on commerce? Chaliye, I think I'll continue on commerce. There's the audience is largely quiet audience, so I would then not take breaks in between and rather continue. So now let's talk about the second focus career. What is commerce career? So we've listened about management. Management में what we did is we understood कि management होता क्या है, और management में हमने ये समझा कि there are largely one option which is available direct 5-year course. तो IPM के through available है, तो वो मैंने समझाया किधर किधर किन किन colleges में मिल सकता है, और UT उसको दो तरीके से पढ़ाता है. एक है crash course और एक है 1-year course. You can do any one of them with us. So that's about management. Now let's come into commerce. Commerce क्या है? So again the format would be largely the same. I'll be talking about commerce होता क्या है. Commerce की अगर dictionary meaning देखेंगे, so it's buying and selling and trading of goods on a large scale between people in different countries or states. This is what is commerce in dictionary में define होता है. So commerce में आप पढ़ता क्या है बच्चा? मेरे ख्याल से बच्चा 3 चीजें पढ़ता है, और मैंने उसको divide करा है. You will study commerce में आप पढ़ोगे क्या? Commerce में आप पढ़ोगे, you will study about managing finance. You will study recording controlling activities and planning short term or long term decisions. मैंने पूरे commerce को primarily 3 areas में divide करा है, just to make you understand कि ये आपके लिए क्या है, so that you can decide whether you want to take this up as something all your life. चलो, let's try to understand. First area, अगर आप managing finance पढ़ोगे, तो basically you will be into finance and banking. आप finance and banking में जाओगे. Finance and banking में सबसे पहले भी अगर अपन बात करें, managing finance में आप क्या करोगे? You will do all about stock markets. You will talk about finance, so you could become a stock broker. अभी उसी को मैं आगे और expand कर रहा हूँ. You could become a stockbroker. You can become a financial analyst. Stockbroker is somebody जो कंपनी के stocks खरीदता और बेचता है. Financial analyst जो बताता है कि भाई ये stock खरीदना चाहिए या ये नहीं खरीदना चाहिए, जो research करता है. Fund manager जो mutual funds को manage करता है. Investment banker, merchant banker. अब इनके बारे में आपको और समझना है, जानना है, तो आप और मालूम कर सकते हो. You can take an individual counseling with me and I can help you, make you understand each one of them. आज के इसमें इतना स्कोप नहीं है कि मैं हर एक को डिटेल में समझा भी पाऊं. सो फाइनेंसेस अगर आपको ये बनना है या आपको बैंकिंग करनी है, बैंकिंग इज ऑल अबाउट बैंक डिपॉजिट्स एंड लोन्स. यू कैन बिकम अ बैंक कैशियर, जैसे एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक है, इनके अंदर यू कैन बिकम अ प्राइवेट बैंकर, ब्रांच मैनेजर, लोन ऑफिसर. आप ऐसा करियर परस्यू कर सकते हो. यू कुड डू दीज करियर्स. सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉमर्स. You can get into finance or you can get into banking. Next, second area is recording controlling activities. Recording controlling activities में आप क्या? You can get into accounts or you can get into as a company secretary. So recording controlling activities में accounts में आप you will be responsible for companies to maintain their records, maintain publish profit and loss statements. So आप उन कंपनी के अकाउंट ऑफिसर बन सकते हो. You can become a chartered accountant. By law, it is mandated that all companies get their accounts audited by a certified chartered accountant. So आप वो chartered accountant बन सकते हो, cost accountant बन सकते हो, financial controller बन सकते हो.
So are these very important people in the company? Yes, they are very important people in the company. Or you can become a company secretary. Company secretary is the one, जैसे ये बड़ी-बड़ी private limited companies हैं जो इतना पैसा market से उठाती हैं, they need to manage their legal affairs of the company, and who does them for them? The company secretary does them for them. So you could get into recording controlling activities में जहां पे आप accounts या company secretary ऐसे वाला career ले सकते हो. आपको अगर ऐसा career लेना है तो आपको commerce as a career choose करना चाहिए. Coming to the third area. Third area is planning short-term, long-term decisions for a country. What are these? You can get in, become an economist, economics पढ़ सकते हो, statistics पढ़ सकते हो, insurance कर सकते हो. And what are these? Economics में you could get into government की RBI, ministry. These are sector specialists, retail, crude, agriculture, metals. इसमें भी बहुत ज्यादा काम होता है जहाँ पे अभी रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी है, it is buying a lot of crude oil. और क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत वेरी करती है. तो अगर आप टाइम पे वो क्रूड ऑयल रिलायंस के लिए खरीद के रखोगे या सौदे रख के करके रखोगे, देयर विल बी अ ह्यूज प्रॉफिट व्हिच विल कम टू रिलायंस. बोलते हैं जब यूक्रेन वॉर हुआ था, रिलायंस एक्चुअली मेड अ प्रॉफिट आउट ऑफ दैट. So how would they do it? They had some very brilliant economists working with them who had made their crude oil bookings in such a way that they made a lot of money. So who's doing that? These are people who have studied economics and they help in that company. So this is one of the areas which I'm saying. Then you can get into teaching, academic research. You could do that also. Next, insurance. You can get into insurance. You can become an agent. Insurance industry बहुत बड़ी agent. Everybody needs insurance. So उसमें you can get into and study. You know what is insurance? Insurance अलग-अलग है. Health sector का है, automobile sector का है, travel का है, property का है. बहुत सारे तरह के insurance हैं. You can become an agent, appraiser, actuary, the underwriter, and you could take up your career in insurance. Next, you can get into statistics. Statistics जहाँ पे आप government ministry के साथ, you know, they need to release the data. Inflation कितना हुआ, इंटरेस्ट रेट्स कैसे चल रही हैं, ये इसमें प्राइवेट सेक्टर आल्सो एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट सेक्टर आल्सो एम्प्लॉयज, टीचिंग में भी आपकी जरूरत है. सो आपको अगर इन सब चीजों की में मजा आता है, इनको मैंने 3 एरियाज बोली. पहला बोला था फाइनेंस एंड बैंकिंग, दूसरा बोला था अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग, एंड तीसरा बोला था ये इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, लॉन्ग शॉर्ट टर्म डिसीजंस. ऐसे वाला आपको अगर करने का मन है तो यू कुड लुक एट कॉमर्स एज योर करियर. अब कॉमर्स एज योर करियर कर रहे हो तो कौन आपको पर्सनालिटीज अट्रैक्ट करते हैं? वो पर्सनालिटी आपने अभी तक किसी ने बताई नहीं है तो बताइएगा. चलो ये पर्सनालिटी का नाम बोलो, कौन बोलेगा इनका नाम? नहीं, कोई भी नहीं. डॉक्टर रघुराम राजन. नेक्स्ट, ही वाज द डायरेक्टर ऑफ आरबीआई. ये कुमार मंगलम बिरला साहब. आई थिंक पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, तो मैं वो क्विज खेलना बंद करता हूँ. उसकी बजाय मैं डायरेक्ट नाम देना चालू करता हूँ. तो मैंने बैठ के, जब तक आप लोग नहीं बता रहे थे, तो मैंने इनके नाम लिख के लिए एंड इनको हाइड करा था, लेकिन अब मैं खुद एक एक का डिस्प्ले करूंगा. ही इज द चेयरमैन बिरला ग्रुप. दिस इज the only lady chairman, Mrs. Arundhati Bhattacharya of SBI. Now she's retired. इनकी अभी recently he passed away. He is Mr. Jhunjhunwala. He is again. ये सब कॉमर्स पढ़े हुए लोग हैं जिन्होंने अपना करियर कॉमर्स में बना. This is Amartya Sen. He's a Nobel Prize winner and he is Warren Buffett investor. So अगर आपको ये लोग कोई इंटरेस्ट करते हैं तो ये सब लोग कौन है? ये सब लोग ने कॉमर्स की पढ़ाई की और आपको इनके जैसा बनना है तो यू कुड लुक एट कॉमर्स एज योर करियर. और भी है मेरे पास कुछ करियर. आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वाज एन एमए इन इकोनॉमिक्स. पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए इन इकोनॉमिक्स पढ़ी. अपने प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण, शी इज बीए इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम JNU. Then we have Mr. Piyush Goyal, Minister of Commerce. Then we have Mrs. Preeti Malhotra, first female president of ICICI. She is a company secretary. So ये सब लोग भी क्या पढ़ाई करी है? They have all studied commerce in their undergrad or grad years, and they have pursued famous careers in commerce. तो अगर आपको इनके जैसा बनना है तो कैसे करना? आपको इनके जैसा बनना है. What is the commerce course structure? तो स्टैंडर्ड 10th के बाद अनलाइक मैनेजमेंट की आप कुछ भी ले सकते हो, इधर आपको कंपल्सरीली कॉमर्स सब्जेक्ट्स चूज करना. तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज ये लेने पड़ेंगे 2 साल. एंड देन
उसके बाद यू विल गेट इनटू योर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आप बीकॉम कर सकते हो, बीएफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हो, बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स कर सकते हो, बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो, बैचलर्स इन बैंकिंग, बैचलर्स इन अकाउंटिंग, ऐसे अलग अलग डिग्री कोर्सेज कर सकते हो। अब इंडिया में भी ऐसे वाले कोर्सेज जनरली पहले 3 साल के हुआ करते थे, अब वो 3 से 4 साल के भी मिलने लगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में ये कोर्सेज अब 4 साल के मिलने लगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर्टेन कोर्सेज 4 साल के मिलने लगे। तो आप ये कोर्सेज ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन ले सकते हो, सीए का, सीएमए का, आईसीडब्ल्यू, पहले सीए को ये सीएमए को आईसीडब्ल्यूए बोलते थे, सीएफए, सीएफपी, दीज आर ऑप्शनल, आपकी मर्जी है, आप ये ले सकते हो। तो ऐसे आपका टिपिकल कॉमर्स का करियर बने। और इसके प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के बजाय आप एमबीए भी कर सकते हो, नोबडी स्टॉप्स यू। आप कॉमर्स के बाद एमबीए वाले रूट में भी जा सकते हो। अगेन यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस एंड आई कैन आंसर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, एवरीथिंग टू पुट ऑन स्लाइड इज वेरी डिफिकल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 टिपिकल रूट्स जो कॉमर्स में होते हैं, 2 टिपिकल रूट्स आर विदाउट सर्टिफिकेशन ओनली डिग्री, या विद प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन डिग्री एंड सर्टिफिकेशन। ये एक टिपिकल है, कोई सिर्फ बीकॉम करके अपना करियर बनाता है। जैसे निर्मला सीतारमन, शी इज नॉट अ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, शी इज ओनली डन बी इकोनॉमिक्स, बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स, एंड देन उन्होंने अपना करियर बनाया। शी फॉलोड एन ओनली डिग्री रूट, बट विद प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कि somebody becomes डिग्री भी ली और चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी ली, वो वाला भी आप कर सकते हो। दोनों रास्ते आपके पास खुले हैं। विदाउट सर्टिफिकेशन रूट कैसे चलता है? आप 11-12 2 साल कॉमर्स पढ़ो, टेक कॉमर्स सब्जेक्ट्स, देन आप 3 से 4 साल की ग्रेजुएशन करो, बीकॉम, बी अकाउंट्स जैसे मैंने बताया वो करो, एंड देन फाइनली पोस्ट ग्रेजुएशन करो, शायद एमबीए, एमकॉम कर लो। दिस इज विदाउट सर्टिफिकेशन का रूट का एक एग्जांपल। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। Again, I wait for a 10 seconds. You can take clips of this, you can take photographs of this. This is the without certification route. तो MBA भी कर सकते हो इधर आने के बाद, ऐसा भी रास्ता अवेलेबल है। और आपको अगर विद सर्टिफिकेशन रूट चाहिए तो विद सर्टिफिकेशन रूट में आप 11-12 कॉमर्स सब्जेक्ट्स लोगे एंड देन ग्रेजुएशन करोगे। ग्रेजुएशन करने के बाद अब ये सर्टिफिकेशन आप कभी भी चालू कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जब आपने बीकॉम पढ़ना चालू करा तभी आपने सीए भी चालू करा, आप इमीडिएटली चालू कर सकते हो। आपको बीच में चालू करना है, आप बीच में चालू करो, 1.5-2 साल बाद, तब भी चालू कर सकते हो। आप पूरा खत्म होने के बाद चालू करना है, आप खत्म होने के बाद भी चालू कर सकते हो। इट्स अप टू यू व्हेन यू वांट टू स्टार्ट। आपको उनके एग्जाम्स लिखने पड़ेंगे, वो सब मैं समझाऊंगा, एंड यू कैन डू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और जब आप ये सीए, सीएस, सीएफए ये कुछ करते हो तो दे आर इक्विवेलेंट टू गेटिंग अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। पहले इसको नहीं मानते थे। अब आई जस्ट ग्रैब अ ग्लास ऑफ वाटर, जस्ट 1 सेकेंड। थैंक यू। सो यू कुड, ये जो सर्टिफिकेशन है अब इसको पूरा डिग्री का स्टेटस मिलता है, दैट इज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का स्टेटस मिलता है। तो ये हो गया सर्टिफिकेशन का। आगे बढ़ते हैं इसमें। हाउ टू एंटर? After standard 10th, you have to get into a junior college on basis of your standard 10th board exams, which you have already done या कर रहे हो. After standard 12th, you have to get into a degree college. और उसके लिए आपको standard 12th के board exams, कुछ जगह नो कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, कुछ जगह अब एंट्रेंस एग्जाम आ भी गया है। After standard 12th, you have to get certificate courses, and certificate में इनके खुद के अपने अलग अलग एग्जाम्स क्या हैं वो समझाते हैं। After standard 12th ये वाले कॉलेजेस हैं, अब जैसे एसआरसीसी, ये जो 1 to 4 जो कॉलेजेस हैं ऊपर, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। जब मैंने ये स्लाइड बनाई थी तब दे डिड नॉट हैव एन एंट्रेंस एग्जाम। मेरी स्लाइड 2-3 साल से मैं ये कॉमर्स के सेमिनार ले रहा हूँ, लेकिन अब सीयूईटी आ गया है, तो इनमें घुसने के लिए आपको सीयूईटी का एग्जाम लिखना है, तब जाके आप इनमें घुस सकते हो। क्राइस्ट कॉलेज का भी ए અને પ્લસ પાછા એ બંને प्लीज म्यूट योरसेल्फ। निलेश प्लीज म्यूट। निलेश रिक्वेस्ट प्लीज म्यूट, थैंक यू। सो अब इनमें ऑलमोस्ट काफी सारे कॉलेजेस में अब एंट्रेंस एग्जाम्स आ गए हैं। तो अगर इन एंट्रेंस कॉलेजेस में घुसना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम लिखना है। कुछ में नहीं है, जैसे मिठीबाई में नहीं है, इट्स स्टिल बेस्ड ऑन योर 12th स्टैंडर्ड मार्क्स, बट ऊपर के 1, 2, 4, 5 इनमें है। लोयोला में नहीं है, इट्स स्टिल बेस्ड ऑन एंट्रेंस एग्जाम। किरोरीमल दिल्ली में एंट्रेंस एग्जाम आ गया है। मद्रास में आपके 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम्स के बेसिस पे। सेंट जोसेफ
इस बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे, सबका अलग अलग है। हेलो सर। यस सर, मीनिंग ऑफ स्टेट कोटा? स्टेट कोटा मतलब दे एडमिट स्टूडेंट्स ऑन लोकल कोटा। जैसे आज आप क्राइस्ट कॉलेज बैंगलोर में दे विल हैव देयर लोकल बैंगलोर कोटा, कर्नाटका कोटा। तो आप अप्लाई करोगे आउटसाइड बॉम्बे से अप्लाई करोगे तो आप आउटसाइड कोटा में जाओगे, यू विल नॉट कम एज पार्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, सो ये सब चीजें आप में से वन ऑन वन मिलेंगे तब मैं और ज्यादा समझा सकूंगा या क्वेश्चन आंसर में समझा सकूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए क्या करना है? तो सर्टिफिकेट कोर्सेज आर रन बाय इंडियन बॉडीज लाइक सीए, सीएमए, ये वाले कोर्सेज आर रन बाय इंडियन बॉडीज। फॉरेन बॉडीज सीएफए, सीएफपी रन करती हैं। All these are recognized by Government of India. CAs are mandated by law for compulsory audit of companies for taxation and other regulatory compliances. Thus, CA and CSR certificate allows you to become as entrepreneurs. तो आप अगर CA बन गए तो आप अपना खुद का business set up कर सकते हो and you can run. Because मेरा जैसा आदमी, if I am running a company, if I am paying more than 40 lakh rupees of revenue, if I am earning, I have to get my books audited by a CA. Unless and until I do it audited by a CA, I cannot file my returns. So CA has a mandatory or a statutory एक privilege है CA को, जो हर किसी को नहीं मिलता है. So that's why CA is very reputed, extremely reputed degree का certification है ये. अब इसमें कैसे जा सकते हो आप? They follow a similar structure. They have multiple levels. What are these levels? Level 1 entry level. जैसे CA में एक CA foundation का एग्जाम होता है, which you can write after standard 12th. Level 2 is intermediate. अलग-अलग papers होते हैं. You can write after 1.5 hours. You can take the intermediate level. And level 3 is the final level. आप करीब intermediate लिखने के 1.5 साल बाद ये लिख सकते हो. ऐसे करके 3 साल में आपका CA complete होता है. Each level consists of multiple papers. You need to qualify all of them. Takes an average of 3 to 5 years to clear all levels. That's about certification. इनमें कोई कॉलेज में आप रजिस्टर नहीं करते हो. इनमें आप इन बॉडीज में रजिस्टर करते हो, इंस्टीट्यूट में, एंड यू कीप क्लियरिंग एग्जाम्स. इफ यू क्लियर एग्जाम्स, दे सर्टिफाई. दिस इज व्हाट इज द सर्टिफिकेशन कोर्स. व्हाट इज द कोर्स फीस फॉर कॉमर्स? आईपीएम की मैंने बताई थी. इधर कॉमर्स की कोर्स फीस कंपैरेटिवली बहुत कम है. डिग्री कॉलेज में 5,000 रुपए साल से लेकर 1.5 लाख रुपए साल तक में सब काम हो जाता है. प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन ये और सस्ते हैं. सीए, सीएमए, सीएस 10 से 50,000 रुपए में पूरा वो सर्टिफिकेशन हो जाता है. सीएफए 2.5 लाख रुपए में. बस कंपैरेटिवली वेरी इनएक्सपेंसिव कोर्सेस. दैट्स अबाउट कॉमर्स. Common myths is they do not require high level of mathematics. True partial does not need scientific mathematics, but quantitative maths is required. आपको ये कला आनी चाहिए कि देख के कि यार मेरा पैसा खर्चा होएगा कि नहीं हो रहा है, वो सब आपको मालूम पड़ना चाहिए. Does not require high level of studies, not true. Requires an in-depth understanding of concepts and applications. Commerce is not something कि मैं पढ़ाई में मन नहीं है, मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं कॉमर्स ले सकता हूं. Not really. If you need to be successful in commerce, आपका एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड शार्प होना चाहिए. पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या चाहिए? यू नीड गुड एप्टीट्यूड विद नंबर्स. वो नंबर्स देख के आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया है कि आप पार्टी में या नहीं किया है. इफ यू गिव द बैलेंस शीट, आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, मालूम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट गुड एनालिटिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स. आप सबको कम्युनिकेट करना चाहिए. हाई मॉरल वैल्यूज, ऑब्वियसली, बिकॉज यू आर द वन हु इज ऑडिटिंग. तो आपकी इंटीग्रिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए. नेक्स्ट, व्हाट आर द रिवॉर्ड्स? रिवॉर्ड्स आर, finance is the core function of any organization. People with finance background, they rise to the top. किसी भी organization में most powerful person कौन होता है? ये finance वाला आदमी. Engineer होएगा, MBA होएगा, but he will not be the top person of the organization. Top person would be largely a chartered accountant who is managing finance. So अगर आप कॉमर्स के बंदे हो तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट टॉप मोस्ट अथॉरिटी पे राइज कर सकते. Challenges: commerce is the most popular field in the country. Maximum number of students study commerce, therefore heavy competition to outperform. This is also true. Engineering में या दूसरे से ज्यादा इधर बच्चे हैं, but फिर बहुत ज्यादा बच्चे हैं, तो अगर आप जरा से भी अच्छे होंगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं.
Guys, that's it. Now we coming to commerce programs are jointly offered by UT and Gurumukh classes. Myself and Gurumukh Raghani sir, हम लोग ये jointly courses offer कर रहे हैं. Universal Tutorials and Gurumukh classes together offer these commerce courses at Universal Tutorials. What is about Gurumukh classes? Gurumukh classes ke, it's about 20 years of teaching experience, professionally qualified lecturers हैं, logical and concept based coaching है, and they have got all India merit in CA courses. मेरे साथ उनके owner Gurumukh Raghani sir हैं. You can see him. He is there very much present. And Abhi, I'll just very quickly, I'll give him also. He will speak to you. So about the founder of Gurumukh Raghani sir. Gurumukh Raghani sir is a merit holder in graduation in Bombay University, founder of Gurumukh classes, 20 years of teaching experience at all levels of CA and commerce subjects in accounts, costing, financial reporting. His main focus has always been conceptual understanding of subjects. So Gurumukh Raghani sir, we welcome you, sir, at Universal Tutorials. Thank you very much for joining us. Sir, it's all yours. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir, for giving this opportunity. It's a honor to be part of UT and work on the professional courses like Chartered Accountancy and CMA, because these are the courses, these are the topmost courses of India. Nowadays, the demand is again increasing when the people in the economy are facing problems of layoffs, and we have a lot of opportunities, lot of employment opportunities coming for chartered accountants. Very good start salaries, very good demand in the market. So I would advise the students, if they are really good in maths, good in logical understanding of the subjects, they should go for these professional courses like CA, CMA and CFA. These are wonderful courses. Thank you very much, sir. Just wanted to let you know, sir, हफ्ते में दो दिन Universal Tutorials खारगर में lecture लेना सर ने चालू कर दिया. It's been now almost 2 months जब सर यहाँ पे आके पढ़ाना चालू कर दिया. So we've launched courses along with Gurumukh sir. So we are doing this plethora of courses with sir. So what are the results which sir has produced? These are some wonderful results sir has produced. Second rank holder in Ulhasnagar, first rank holder, third rank holder. Amrita Pai, she was ranked All India 7 in CA Foundation, and Nilesh Motiramani, he was ranked 48 in CA Foundation. So sir has this brilliant legacy which sir brings to Universal Tutorials. And जैसे Universal Tutorials की शुरू से हमेशा belief रहा है to bring the best and to deliver the best results. So we've already started a batch at Universal Tutorials Kharghar. We offer 11th and 12th commerce based programs जहाँ पे हम सारे subjects पढ़ा रहे हैं, accounts, economics, business studies and mathematics, for coaching, test series and also for entrance exam CA and CS Foundation. In last 7 years, we've produced 7 times UT have produced first in Mumbai in 12 CBSE commerce. And now with faculty team of CA, CS, MSc Maths, law experts, average of 15 plus teaching experience, complete study material and testing support, focused guidance and preparations for careers after standard 12, we are really looking to do it much better than earlier years. And with the support of Gurumukh Raghani sir, we'll be able to really do well. And we are the first people in Navi Mumbai to offer such organized classes in Navi Mumbai for commerce. Chaliye, I think I'm almost to the end of thing. Classroom courses are available at UT Kharghar, all subjects CMA. I think this is a slight repeat. You can book an appointment for one-on-one counseling session to make up for your 11th and 12th courses, जो हमने already चालू कर दिए हैं. So अगर any one of us is looking, then you can come and take admission. What are the UT क्या programs पढ़ाता है after standard 10th? To give you an idea, हम engineering पढ़ाते हैं, that we do it with champions. हम medical पढ़ाते हैं, again we do it with champions. हम 11th 12th साइंस पढ़ाते हैं, that we do it ourselves. UT कॉमर्स हम गुरुमुख सर के साथ करते हैं. Then management हम अपने आप करते हैं, and study abroad SAT programs we do it alone. So these are the 6 options which you can do with engineering, medical, pure science, commerce, management or study abroad. And all programs are designed in such a way that these all can be combined. आप SAT को commerce के साथ combine कर सकते हो, commerce को IPM के साथ combine कर सकते हो,
engineering को SAT के साथ combine कर सकते हो. You can do these combinations. अब अगर आपको इनमें किसी के भी बारे में बात करनी है, then you can do a profile assessment with me by calling up Surjit. You can do a profile assessment by calling up Surjit at this number. Again, I give you 10 seconds if you want to do that. You want to talk to me individually, you can make an appointment with Surjit and she'll be able to do give you an appointment with me and you can do a profile assessment. Surjit's number is 98881999826. I repeat, 98881999826. You can also book an appointment with Surjit and meet online counselor. You can meet on Zoom, need not come to Kharghar. Zoom pe milna hai. We are very much Zoom enabled and we can help you decide and choose the program and enroll with us. Again, Surjit's number is 98881999826 or you can email her at utnmsurjit@gmail.com. If you want a PDF of this presentation, आपको इसकी पूरी PDF चाहिए तो ये एक WhatsApp नंबर है 7710004690. I repeat 7710004690. इस पे एक हाई भेजिए. We will send you a PDF of this PPT. Thank you very much. Now we are open for question answers. So, we are open for question answers. Myself and Gurmukh Raghani sir, both are available for any questions that you may have. There is a feedback link which has come in your chat box. Please provide a feedback of that. Any questions? You can unmute yourself and ask questions too. Any questions? If you have no questions, then I will repeat these slides once more. This is the number for Surjit ma'am. You can take an appointment with me. Surjit ma'am number is 9888199826. Her email is utnmsurjit@gmail.com. You can take a photograph of this and you want a PPT of the PDF of the PPT if you want, then you can send a WhatsApp hi on 7710004690. Any questions? Unmute yourself and ask, or else we are done with the presentation. Thank you very much. You can unmute yourself and ask any questions